श्री स्वामी समर्थ। अध्याय 8। श्री गणेशाय नमः। जय जयाजी सुखधामा, जय जयाजी परब्रह्मा, जय जय भक्तजन विश्रमा, अनंत वेशा अनंता। राजे निजाम सरकार, त्यांचे पदरी दप्तरदार राजे रायबहाद्दर शंकरराव नामक 6 लक्षांची जहागीर, त्याप्रती सकल सुखे अनुकूल असती। विपुल संपत्ती संतती, काही कमती असेना। परिपूर्व कर्म अगाध, तया लागला ब्रह्मसंबंध। उपाय केले नानाविध, परी बाधा न सोडी। संबंध बाधा म्हणून चैन न पडे रात्रंदिन। गेले शरीर सुकोन, गोड न लागे अन्न पाणी। नावडे भोगविलास, सुखोपभोग कैच्या त्यांस। निद्रा नयेची रात्रंदिवस, चिंतानले पोळले। केली कित्येक अनुष्ठाने, तैशीच ब्राह्मण संतर्पणे। बहुसाल दिदली दाने, आरोग्य व्हावे म्हणोनी। विटले संसार सौख्यासी, त्रासले या भव यात्रेसी। कृष्ण वर्ण आला शरीरासी, रात्रंदिन चैन नसे। कोणा लागी जावे शरण, मजवरी कृपा करील कोण। सोडविल व्याधी पासून ऐसा कोण समर्थ। मग केला एक विचार, प्रसिद्ध क्षेत्र श्री गाणगापूर। तेथे जाऊनी अहोरात्र दत्त सेवा करावी। सेवा केली बहुवस, ऐसे लोटले 3 मास। एके रात्री तयांस, स्वप्नी दृष्टांत जाहला। अक्कलकोटी जावे तुवा, तेथे करावी स्वामी सेवा। यती वचनी भाव धरावा, तेने व्याधी जाये दुरी। तरी ते तेथेची राहिले, आणखी अनुष्ठान आरंभिले। पुन्हा तयांसी स्वप्न पडले, अक्कलकोटी जावे त्वा। हे जाणोनी हित गोष्टी, मानसी विचारुनी शेवटी। त्वरित आले अक्कलकोटी, प्रिय पत्नी सहित। तया नगरीच्या नरनारी, कामधंदा करिता घरी। स्वामी चरित्र परस्परी, प्रेम भावे सांगती। कित्येक प्रांत स्नाने करोनी, पूजा द्रव्य घेऊनी। अर्पावया समर्थ चरणी, जाती अति त्वरेने। इति श्री स्वामी चरित्र सारामृत, नाना प्रकृत कथा संबंध। सदा परिसोत प्रेमळ भक्त, अष्टमोध्याय। गोड हा श्री स्वामी चरणारविदार्पणमस्तु। इति श्री स्वामी चरित्र सारामृते, अष्टमोध्याय। श्रीरस्तु।